Good morning, ma'am. Am I audible now? So we can start the class. Basically, almost everything in anatomy we have covered. Okay, and I asked so many times, you people just go through. If you feel something is left out or something you will not able to understand, just let me know. So, as per, I'll check once. Lymphatic system and endocrine system. These are the two major things which is left into the anatomy. Okay, so we will start with endocrine and I'll give you a short review of lymphatic system also at the end of this lecture. Okay. And so if I talk about endocrine system, I told you this is gland. So one thing I told you related to this endocrine gland is they are ductless glands. If I talk about other glands which other than this endocrine gland, salivary glands are present, they have ducts in their system. But if I talk about into the organ, one is the cells where they produces the saliva, and another one duct is their common passage is there from which they secrete out these. Okay, but if I talk about endocrine gland, they don't have that. They directly secrete their secretions or hormones into the bloodstream. So, and what is the function of these hormones? Say, as per their design and nature, they perform the different activities into the human bodies. They help to carry out the different activities into the human body. So, so I told you that these hormones are produced into the different glands into the human body, and they directly releases their hormone into the bloodstream or into the circulatory system, and from there it reaches to the target organ, and they perform the different functions. Okay, so coordinate the body functions in same manner as your nervous system does. Okay. Now in human body, if or in any working system, if I talk about into offices, into human body, what happens, you can see, or into any organization also, you can see if the things the different group of people, they synchronize and work together, so they will work smooth in coordinated manner. Okay, basically, if they work in differently and they don't agree with each other and they support each other, the coordination is not there, the work done is not that much smooth. So in order to same thing happens with the human body also. So when these different systems into the body, they work together, they work with each other, they perform, the coordinated system a network or complement their work each with each other. So the work functionality, is at first of all thing, there is no confusion. Okay, whatever the A body is doing, or for example, if I talk about related to this, um, any hormone release, for example, or appetite release thing, if I talk about, let's take, you see a beautiful, or very tempting food. What happens basically? The signals basically from eye or from nose, either it by, seeing that or by smell, you can feel that. Okay. So what happens? That message goes to the brain through the nervous system, and from there it releases, uh, or give commands to the salivary gland, and they release saliva. Excessive of salivation or excessive of saliva, and you can feel that. Okay, so so you can see in the nervous system, they complement this salivary gland. There are two different systems, they complement each other, and then you go and give commands. If food is present into front of you, or you go and eat that food, then whole process of digestion starts. So you can see how three systems work together from digestion, then it is absorbed into the body and then move to rest of the body parts. So you can see how this whole coordinated system is, and at different speed they are working, but ekdam without any confusion, with a smooth coordination, usually they work. Okay,
So endocrine system and nervous systems work together, integrated in a brain, and complement each other, but they tend to work at a different. डेफिनेटली दैट्स ट्रू कि हर एक सिस्टम का जो फंक्शनैलिटी होती है वो सेम स्पीड से नहीं होती. माइट बी नर्वस सिस्टम बहुत क्विक रिस्पॉन्स करता होगा बट एंडोक्राइन नहीं. माइट बी इन सर्टेन केसेस depending upon the need and depending upon the basic characteristic of that particular system on the basis of which they perform their functions. Okay, nervous system respond within this split sections but their actions soon fade. Okay, I told you for example जैसे आपका कोई भी सेंसरी नर्वस सिस्टम की मैं बात करूं या मोटर नर्वस सिस्टम की, तो कोई भी मैसेज ब्रेन तक गया, ब्रेन से इंफॉर्मेशन आई और वो तुरंत एक्शन होके वो एक्शन खत्म हो गया, तुरंत वेरी क्विक रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द बॉडी. बट इफ आई टॉक अबाउट रेस्ट ऑफ द सिस्टम्स जो उस इंसिडेंट को कैप्चर कर रहा है या उससे रिलेटेड कोई चीज है, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा इट विल बी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ओके, हार्मोन्स रेगुलेट एंड प्रोसेस सच एज. तो क्या क्या फंक्शंस होता है बेसिकली हार्मोन्स का, तो दे ब्रेक डाउन द केमिकल सब्सटेंस एंड मेटाबॉलिज्म. जो भी आपका लाइसिस हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का, उसमें ये ज्यादातर वर्क करते हैं कि हम जो भी खा रहे हैं, हम जो भी पी रहे हैं उसमें. ओके, फ्लूइड बैलेंस एंड यूरिन प्रोडक्शन. बेसिकली आपका मैंने अभी एक्सक्रीटरी पढ़ाया तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ फ्लूइड बैलेंस में ये हेल्प कर रहा है, रिजॉर्प्शन कब करना है, रिलीज कब करना है, ठीक है, एंड कितना अमाउंट ऑफ. एंड आपको वहां पे देखा होगा कि एडीएच हार्मोन है, फिर अदर हार्मोन्स आर आल्सो erythropoietic हार्मोन्स हैं, and different hormones are working into this whole process, you know, कि कब कितना फिल्टर आउट करना है, कब कितना रिलीज करना है एज पर देयर पैरामीटर्स. उनके बॉडी में अपने मेजरिंग पैरामीटर्स होते हैं एवरी सिस्टम के, उसके अकॉर्डिंगली दी वर्क. ओके, देन बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आपका जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसमें आप देखते होंगे फॉर एग्जांपल कि जब बेबी होता है वेरी स्मॉल, विद टाइम जो है 1 साल के बाद वो थोड़ा और बढ़ाते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद वो बड़ा होता जाता है. तो आप इनिशियली देखते थे बेबी जो है सिर्फ बेड पे लेटा है, बेसिकली वॉक करना सीखेगा, ग्रेजुअली वो ग्रो होता जाएगा. तो दिस इज हाउ योर ग्रोथ हार्मोन्स वर्क एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यू नो. नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स शॉर्ट है बट ग्रोथ हार्मोन का रिस्पॉन्स आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लंबा रहेगा. तब इसके ग्रोथ हार्मोन का फंक्शनैलिटी बेसिकली कम हो जाती है एट द एज ऑफ आफ्टर 18, धीरे धीरे कम होता जाता है, एंड 22 इन केस ऑफ फीमेल्स एंड 25 इन केस ऑफ मेल्स. उसके बाद जो है ग्रोथ हार्मोन बहुत लेस एक्टिव होता है. ओके, then next is your sexual reproduction. If I talk about, so again there is a lot of hormones related to this systems also. If I talk about basically आपका जो है one hormone if I talk about is here this आपका टेस्टोस्टेरोन है, आपका ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है. मेल्स एंड फीमेल्स की बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स का, ऑक्सीटोसिन है, अलग अलग हार्मोन्स का अलग अलग फंक्शनैलिटी होता है, अलग अलग परफॉर्मेंस होता है. ओके, देन this is the 12 parts of your endocrine system, your pineal body, your pineal gland. Then we have a pituitary gland, then we have a thyroid, then heart, then stomach, then pancreas, and then hypothalamus, thymus, adrenal gland, जो आपका किडनी के ऊपर हाँ present होगा. Then we have a kidney, then we have intestine, and lastly, in case of females, we have ovary. So this is the 12 pairs of endocrine gland. Okay, now let's start with one by one. Just go with the hypothalamus. First is your hypothalamus. If I talk about hypothalamus, that serves as the main link between the nerves and the hormones and produces the releasing factors or regulating factors को ये produce करता है, and they travel to the pituitary gland. और ये क्या करेगा, gradually आपका pituitary gland तक travel करके जाता है. Okay. So hypothalamus and pituitary glands are the part of
डाई इंसेफ्लॉन रीजन, ये ब्रेन में एक रीजन होता है इंसेफ्लॉन का, उसी का जो है ये पार्ट होते हैं, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस कनेक्ट्स टू द नर्वस सिस्टम, to endocrine system, and it receives and processes signals from other region and pathways and translates them into hormones. So जो भी signals आ रहे हैं, जैसा भी signals आ रहा है, उनके basis पे ये hormones को release करता है, ठीक है। And जो भी केमिकल मैसेंजर्स हैं उनके बेसिस पे ये प्रोडक्शन करेगा, ओके। So the hormones flow to the pituitary gland, which is connected to the hypothalamus by infundibulum, and the fundibulum is the connecting link, okay. And some hormones are stored in the pituitary stores for later release. Others pulse it to secrete its own hormone, and the hormones released by the pituitary gland and the hypothalamus controls the other endocrine gland and regulates all major internal functions. तो ये maintain करता है, okay? So ये है आपका hypothalamus का name, okay? Then next coming to your thymus gland. थाइमस ग्लैंड बेसिकली मैंने आपको बताया हुआ कि इम्यून सिस्टम के फंक्शनैलिटी पे वर्क करता है, टी सेल्स बनाने में, मेमोरी सेल्स बनाने में। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन लास्ट क्लास। सो थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूसेस द progenitor cells which is matured into the T cells, thymus derived cells, हम जिसको T cells में thymus derived cells होते हैं, okay? And the body uses T cells to help and destroy the infection or a cancerous cells, okay? तो मैंने क्या बताया आपको, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हम जो है बॉडी को एक लाइव एटिनेटेड वायरस या लाइव एटिनेटेड सब्सटेंस बॉडी में इंड्यूस करके उसको बताते हैं कि अगर ये आएगा तो इस तरीके की एंटीबॉडीज, तो जब हम उसको बॉडी में इंड्यूस करते हैं, ठीक है, तो एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एट अ सर्टेन स्टेट में इंड्यूस करते हैं ताकि वो डिजीज ना कॉज करे। जब हम वैक्सीन की बात करें तो व्हाट हैपेंस कि हमने सर्टेन स्टेट में उसको ऐसे बॉडी में इंजेक्ट किया सेफेस्ट में ताकि वो डिजीज ना कॉज करे, बट अपना बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रखते हैं। तो जब हम उस चीज को बॉडी में इंड्यूस करेंगे तो बॉडी उसको फॉरेन पार्टिकल समझ के डेफिनेटली इसके आगे एंटीबॉडीज बनाएगी, और ये एंटीबॉडीज जो है वो क्या होगा, स्टोर्ड हो जाएगा एज अ मेमोरी सेल में या टी सेल में जाके। तो जब नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई लाइव वायरस बॉडी पे अटैक करता है तो व्हाट हैपेंस, या लाइव इन्फेक्शन अटैक करेगा, लाइव पैथोजन अटैक करेगा, तो व्हाट हैपेंस बेसिकली, बॉडी ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी, वो टेस्ट नहीं करेगी, शी इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि इस जेनेटिक जीनोम का या इस जेनेटिक मटेरियल का अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा तो उसके साथ मुझे कैसे लड़ना है। तो वो टी सेल स्टोर करके रखा है, वो दे विल प्रोड्यूस दैट मच ऑफ एंटीबॉडी, ओके। These cells are so vital, they are often donated to those in needs, and the thymus cell and the primary donor of the cells for lymphatic system, much as bone marrow is the cell donor of the cardiovascular system. तो ये एक सेल डोनर फॉर्मेट में भी होता है, जब भी किसी सिस्टम को नीड होती है, ठीक है, तो ये सेल वहां से डोनेट कर देता है, ओके। नेक्स्ट इज योर एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो आपकी किडनी के अपर पार्ट में होता है, ठीक है। अब जो आपका बॉडी में फ्लाइट और फाइट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी आप कोई फियर कंडीशन में होते हैं तो आप क्या करते हैं, फाइटिंग जो टेंडेंसी होती है बॉडी की वो कहाँ से आती है, तो वो आपका एड्रीनल ग्लैंड्स होता है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, ओके। So adrenal glands are pyramid shaped organ and it sits on the top of each kidney। मैंने ये इनिशियली आपको भी बता दिया था कि किडनी के टॉप पे आपको मिलेगा, ठीक है। And each adrenal gland consists of two structures. One is your adrenal cortex and another is your adrenal medulla. Okay, cortex and medulla, adrenal cortex, adrenal medulla। अब ये क्या हार्मोन्स बनाते हैं? Okay, so adrenal cortex is a network of fine connective tissue and makes the most of its gland, and it secretes a range of steroid hormones। कि क्या किस तरीके का हार्मोन्स secrete कर रहा है? ये basically produces the steroid hormone, जैसा कि आपका cortisol हो गया,
which manages the protein and glucose level. Aldosterone हो गया, which adjusts our level of water and salt into the human body. And एंड्रोजन हो गया एंड ईस्ट्रोजन हो गया secreted by the adrenal cortex in small amount by sex. Okay, both sexes, मतलब females के cases में भी and males के cases में भी. Okay, the adrenal medulla, the inside part of the gland, produces epinephrine, non epinephrine, जो आपका बेसिकली आप देखते होंगे कि फाइटिंग कैपेसिटी में जो फियर कैपेसिटी में या स्ट्रेस केसेस में भी हम कहते हैं ना हैप्पी हार्मोन है इपिनेफ्रिन जो है आपका रिलीजिंग, और डिप्रेशन के केसेस में, जो स्ट्रेस केसेस में, एंजाइटी केसेस में, तो वो इपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ये दो हार्मोन्स होते हैं जो सारा कंडीशन को बैलेंस करते हैं. तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स में क्या होता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स में क्या होगा, स्ट्रेस किया ब्रेन में आपका जो भी हाइपोथैलेमस रीजन है उसने कमांड दिया पिट्यूटरी को, नर्व्स के थ्रू मैसेज आया पिट्यूटरी से जाएगा आपका दिस एड्रीनल ग्लैंड को. एड्रीनल ग्लैंड क्या करेगी, फिर एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन को रिलीज करेगी. ठीक है, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए कि तुरंत बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तुरंत को रिलीज करना है तो ये होगा. ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में उस चीज को मैनेज करने के लिए क्या करेगा, वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड को रिलीज करेगा एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को. होल प्रोसेस विल बी सेम. ठीक है, बट आपका जो है बस रिलीज ऑर्गन भी सेम है, बस आपका अपर एंड लोअर पार्ट पे डिफरेंट हार्मोन्स को ये रिलीज करता है. ओके, सो दिस इज योर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. So until now, any doubt, any queries? Okay. Madam, Yes. these as adrenal cortex secretes these androgens and estrogens. I mean, they are additionally secreted by them, na? Principally or chiefly, they are secreted by gonads, na? Epinephrine and non-epinephrine. No, not really, not. This is estrogen and another thing. You were telling, na? They are secreted in a small amount by adrenal cortex. Yeah, they are basically, if I talk about this estrogen and progesterone, they are basically, as per my knowledge, where I have discussed this point. Where? Let me check once. Ji. Let me check once. Estrogen and progesterone, as per my knowledge, is basically, if I talk about, yes, when it comes to the estrogen, majorly produces by progesterone, majorly they are produced by ovaries in case of females. Okay, in some small amount they are produced by the. Okay,
Yes, I thought that it could be a Hello. question that which are the glands which secrete them. So I think they are secreted by Basically, they these. are produced by reproductive systems only. Okay, a very small Yeah. amount or very cautious amount of things will be produced by these glands. Okay, because Okay. if I talk about not related to this the menstrual functionalities or other functionalities into the female body, these hormones are also responsible for other activities sometimes, if I talk about development of body, if I talk about or growth hormones, something like, because they comes at puberty. So in that scenario, or certain scenarios, they produce it. Okay. Okay. Basically, if I talk about adrenal gland, they produce this cortisol or corticosteroid, you can say, and आपका basic adrenal stones they produces. Okay, very small amount again. Okay. Other than that, rest of the things which we have already discussed, but epinephrine is there, non-epinephrine is there. Okay, testosterone again produces by your testes. Okay, and rest is there. Okay, clear? Now it's clear. So coming to next part is your parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. So can anyone tell me what is the difference between parasympathetic? So whenever in any stressful condition, if I talk about parasympathetic nervous system, whenever is there any, stressful condition, and where you have to basically rest kind of thing you need, and that scenario, your parasympathetic nervous system will activate. Okay. And sympathetic to whenever there is, fighting section and you need to work in that scenario, your sympathetic systems will work. Okay. So these are the two different types of nervous system into the human body basically. अब आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट के केस में फॉर एग्जांपल हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम्स भी कहते हैं यूजुअली, एंड सिंपैथेटिक सिस्टम्स को वी कॉल्ड इट एज अ फाइटिंग कैपेसिटी सिस्टम और फियर और फाइट स्टेट में जो सिस्टम एक्टिवेट होगा. ओके. So basically sympathetic nervous system is a part of automatic nervous system, and that serves to the accelerate the heart rate, constrict the blood vessels, and raise the blood pressure. Okay, so this is the basic function of your sympathetic nervous system. Okay. If I talk about this parasympathetic nervous system, basically nervous system जो है ये again automatic nervous system का part होता है. इसका फंक्शन अपोजिट टू हो जाएगा, आपका हार्ट रेट को स्लो करेगा और इंक्रीज करेगा इंटेस्टिनल एंड ग्लैंडुलर एक्टिविटीज को, एंड रिलैक्स करता है आपके स्फिंक्टर मसल्स को. ओके. सो यू कैन सी नाउ कि आपका जो पैरासिम्पैथिक, जब आप वेन एवर यू विल बी इन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस और समथिंग, व्हाट हैपेंस, आपकी पीपल्स में एक्शन देखेगा, आपकी आंखें ऐसे आइदर दे विल कॉन्स्ट्रिक्ट आइदर दे विल डायलेटेड, फिर आपका जो स्टिमुलेट सलाइवेशन हो जाता है, स्लो हार्ट रेट हो जाएगा. ठीक है. कंस्ट्रिक्टेड एयरवेज हो जाएंगे, स्टिमुलेटेड एक्टिविटीज ऑफ द स्टमक, inhibit the release of glucose and stimulate the gallbladder, stimulates the activities of the intestine and contracts the bladder. तो ये सारा जो फंक्शन है ये आपका बेसिकली आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करेगा. सिंपैथेटिक क्या करेगा कि पीपल्स को डायलेट कर देगा, जो मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल जब भी आप स्ट्रेस में होंगे क्या होगा, आई बॉल्स यूजुअली और जो आपके पीपल्स होंगे बेसिकली वो डायलेट होता है, आईज में हमारी फंक्शनैलिटीज दिखती है. ठीक है. फिर आपका salivation means dryness of mouth is another sign and symptom. Okay. Then heart rate is definitely, when you are in case of stress, what happens, आपका heart rate definitely increase करेगा. Okay. Then आपका relaxed airways हो जाएंगे,
you will be like, जैसे नॉर्मली आपका जो भी ब्रीदिंग रेट होगा आइदर उससे बहुत ज्यादा लो हो जाता है कई बार यूजुअली inhibit the activities of the stomach, stimulate the release of glucose, inhibit the gallbladder, inhibit the activities of the intestine, secretes epinephrine and non-epinephrine. अब पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम जो है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को करेगा स्ट्रेस को, ओके, and then relax the bladders, the irritations. तो ये बेसिकली आपके दोनों का मेजर फंक्शनैलिटीज है, ओके. तो if I talk about sympathetic system का जो एक्शन होता है वो बहुत क्विक होता है, बट इन केस ऑफ पैरासिम्पेथेटिक एक्शन बहुत स्लो होगा. वन इज दिस थिंग, ओके. और आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ये क्या करेगा, प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इंक्रीज फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी. उस कंडीशन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इंक्रीज करेगा सिंपैथेटिक सिस्टम. बट जो आपका पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम होगा व्हाट इट विल डू, relaxes the body and inhibit the high energy functioning. So high energy functions होगा उनको बॉडी में कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, उनको रोकेगा, ओके. फॉर एग्जाम्पल आपका सिंपैथेटिक जो सिस्टम होगा बेसिकली इसका जो जनरेशन होगा वो अफेक्टेड एरिया टारगेट एरिया में ही यूजुअली जनरेट होगा, ठीक है. बट इन केस ऑफ पैरासिम्पेथेटिक यूजुअली ये जनरेट होता है आपका लोकलाइज इफेक्ट्स एंड इट्स टारगेट एरियाज में. जो भी आपका लोकलाइज okay. Then if I talk about this sympathetic system, they ये है sympathetic system, they basically acetylcholine को release करेगा at the effector system. So these are the basic differences, and whenever this something I can say stressful happens, so sympathetic system comes into the action and they releases a hormone, okay. Now next is your kidney में. If I talk about basically kidney produces two hormones, majorly one is your vitamin D, erythropoietin indicate that is related to blood level. आपका associated होता है. Vitamin D is essential for the numbers of different huge numbers of functions into the human body, okay. Most of the vitamin D that is in the blood is inactive and modified by kidney and other tissues to activate. Definitely आपको कोई भी बॉडी में चीज अगर प्रेजेंट होगी आप किसी भी सोर्स से लेंगे तो आप क्या देखते होंगे, इफ यू गोइंग टू द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, वो कहीं ना कहीं जो है वो चेंज करता है अपने फॉर्म को एंड देन इट विल कम इनटू द साइकिल ऑफ मेटाबॉलिज्म, ओके. सो एक्टिव विटामिन डी स्टिमुलेट्स करेगा, क्या करेगा, स्टिमुलेट किस चीज को करेगा, कैल्शियम को फ्रॉम द एंड इट इम्पोर्ट द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी बोन्स. तो आपका जो भी आप कैल्शियम ले रहे हैं, ठीक है, वो फिर कैल्शियम भी चेंज होता है, ठीक है, कॉल कैल्सीफेरॉल फॉर्म में, फिर वहां से फिर वो जो है बोन्स में जो है आपका यूटिलाइज होता है फंक्शनल फॉर्म में एंड वहां पे आपका डिपोजिशन होगा, जो भी फॉर्मेशन होगा सेल्स का, दैट इज ओके. एंड अदर देन दिस आपकी बोन पोरोसिटी के अलावा इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज द अदर फंक्शन, so they basically they regulate the response of the immune system to the infection. Vitamin D is also important for the immune response, okay. So erythropoietin is produced when the oxygen levels in the blood are low. Basically erythropoietin का functionality आपका hemoglobin levels से होता है, ठीक है. It acts in the bone marrow to stimulate the production of mature RBC. Mature RBC की production को increase करता है and maintain the healthy oxygen level in the tissue. So RBC is a single thing which carries the oxygen to the brain. So one, if I talk about the structure, तो आपका जो RBC का structure देखिए
तो चारों corners will bind to the 4 oxygen molecule, and then this is how they transport it to the brain. Okay, so that's why ऑक्सीजन लेवल की जब जरूरत होती है तो आरबीसी फंक्शनैलिटी को बढ़ाते रहते हैं. Intestine makes hormones like stimulates and produces the release of enzymes that aids the digestion. Okay, so आपका digestion related enzymes को ये produce करेगा. Okay, so जैसे माउथ से आपका जो भी प्रोडक्शन होगा तो माउथ में या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स में, तो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट सलाइवा, सलाइवा के बाद आपका सलाइवा में एमाइलेज प्रोड्यूस होगा. ठीक है, एमाइलेज जो है एंजाइम्स ये आपका डाइजेशन में जो है कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेक डाउन को बेसिकली, फिर आप उस फूड को swallow करते हैं, swallow करने के बाद इसोफेगस में आएगा, फिर लिवर में मतलब स्टमक तक पहुंचता है, स्टमक से फिर वो क्या करेगा कि लिवर अपना सिक्रेशन देता है. ठीक है, लिवर सिक्रेशन देगा, क्या क्या देगा, लिवर एंड गॉल ब्लैडर मिलकर टू कॉमन बाइल डक्ट and they secretes the gastric juices, basically bile juice को secrete करेंगे ये. ठीक है, एंड स्टमक में if I talk about तो आपका जो है the HCl is present, तो ये फर्दर आपका लाइसिस में हेल्प करेगा, पेप्सिन डाइजेस्टिव प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा. ठीक है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया को किल करेंगे. HCl basically does that. फिर after that food moves to your and this intestine region. Okay, तो वहाँ पे intestine में basically small intestine is there जहाँ पे आपका absorption of the nutrition होगा, water होगा. ठीक है, peptides होंगे, sucrate होगा, and फिर large intestine में reabsorption of water, ions and everything happens. फिर आपका जो है rectum में anus आ जाता है. Okay, so this is ovary. There are two basically in case of females, and they produces your this progesterone and estrogen, and they produces the basically आपका जो cycle होता है. If I talk about female body में, there is a whole cycle of 30 days that is going on basically और वो 30 days at the initially at the time of birth. What happens in case of when a female born, he basically she is born with a certain set of eggs, एंड वो एग्स जो होते हैं टाइम पे कुछ मेच्योर होंगे, वो ग्रो नहीं करते, नए एग्स बॉडी में नहीं बनते फीमेल्स की. तो व्हाट हैपेंस कि द मेजर फंक्शन इन केस ऑफ फीमेल बॉडी आफ्टर प्यूबर्टी, व्हाट हैपेंस कि एवरी साइकिल एवरी मंथ में एक एग मेच्योर होता है बेसिकली. ओके, इन आइदर राइट ओवरी आइदर और लेफ्ट ओवरी में एक एग मेच्योर होगा और वो अपना पूरा प्रोसेस लाइफ साइकिल जिएगा, और इन बिटवीन अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो बॉडी से जो भी है वो रिलीज हो जाता है. जो एग है, मेच्योर्ड एग है, उसका सर्टेन पार्ट कॉर्पस लूटियम तो स्टे करेगा, बट सर्टेन पार्ट ऑफ दैट विल बी मूविंग आउट, और वही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में आता है. तो यूजुअली इट इज अ साइकिल ऑफ 28 to 30 days, जिसमें जो है अ लॉट ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव रीजन. आपका ओवरी यूट्रस में काफी चेंजेस हम देखते हैं. So the main sex glands are the ovaries into the female and testes into the male. The sex hormones they produces and stimulate produces the egg and sperm respectively, and influence the early development of embryo into a boy or a girl. After birth, they circulates and remain low until the puberty. I told you puberty is a मतलब इन केस ऑफ फीमेल्स तो आपका जो आप जब बर्थ लेते हैं तो देयर इज अ लैक्स ऑफ सेल्स, लैक्स ऑफ एक्स इज स्टोर्ड इनटू योर दिस ovaries. Okay, with time these will grow. Okay, but in case of males they are produced into the body. Okay? In females the ovary produces more estrogen than progesterone, and then in male the testes increases their output of androgens such as testosterone. So you can see testicle stores the testosterone basically. Now coming to the next gland is the pineal gland. Pineal gland is a small and fine cone shape, which is how it is got its name is located at back of the dicephalon region of the brain. Okay,
At night, in the absence of light, the pineal gland secretes the hormone melatonin. Okay, melatonin regulates the body sleep pattern in both cardiac कार्केडियन theories and this your seasonal patterns जैसे भी बॉडी का जो भी साइकिल है फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे कि कुछ लोगों की फिक्स साइकिल है 9 बजे मतलब 9 बजे दे हैव टू बी ऑन देयर बेड एंड दे विल ऑटोमेटिकली विदाउट एनी अलार्म दे विल wake up at 5 6 whatever their body routine is. Certain people has the body rhythm of sleeping at 12, certain has 3 a.m 4 a.m, whatever how you train your body on the basis of this thing. It's a biological clock is here. If I talk about into the human body, this your melatonin, it will work as a biological clock. Okay. So in morning, when the light hits the eyes, the photoreceptors in the retina send the signals to the pineal gland, and which decreases the melatonin production, and we wake up. Okay. तो मेलेटोनिन कब प्रोड्यूस होता है जब हम सो रहे होते हैं और जैसी लाइट हिट करती है लाइट की कांटेक्ट में आप जाते हैं लाइट के उसमें जाते हैं तो व्हाट हैपन कि आप ऑटोमेटिकली जग जाते हैं मेलेटोनिन का प्रोडक्शन फिर कम हो जाता है ओके so this is how this cycle will work. That's why in older generation or older people used to say the night is meant for sleeping process. Why it is so? Because of this, pineal gland का functionality is totally depending upon the light. तो pineal gland जो है वो light associated work करता है. That's why the earlier people used to say कि night is meant for sleeping purpose. Okay. But nowadays, what happens? We have a lot of this synthetic lights. जैसे हमारा synthetic lights, we have tube lights and anything. So people usually alter this. So whenever you are sleeping, just make sure your room lights will be off. That's all the best way we can deal with this normal mechanism of body. Okay. Now coming to the master gland, that is your pituitary gland. Master gland is most influential gland. जो बाकी सारे glands को control करता है. That's why it is known as a master gland. Okay. And so it is one of the most influential systems into the endocrine. It actually two distinct glands in one. Okay, its front or anterior lobe manufactures 7 major hormones and releases them into the bloodstream. Behind is a posterior back lobe, which receives two main hormones from the hypothalamus and lies it and then release the three hormones as shown. Okay, you can see into this. जैसे आपका जो एंटीरियर है एंड पोस्टीरियर दोनों lobes हैं okay and the anterior lobes they produces FSH, LH, GH, MSH, PRL, okay, ACTH and TSH. Posterior produces three major hormone ADH, oxytocin and basically ADH and oxytocin only, okay. So these are the different lobes where they work. FSH is follicular stimulating hormone, LH is luteinizing hormone, GH is growth hormone, MSH is melatonin stimulating होता है आपका फिर this ऑक्सीटोसिन हो गया आपका फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है फिर एड्रेनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन है फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन है पीआरएल इज जो प्रोलैक्टिन हार्मोन so these are the different hormones and they work at different sites into the human body okay now you can there are the different color codes they use कि कैसे ये जो है different arrows which represent ki this region is responsible for formation of this thing into the hypothalamus okay so hypothalamus basically we need to understand this there is two lobe anterior lobe and posterior lobe anterior lobe produces the majorly 7 hormones posterior lobe produces 2 hormones okay and they work at 3 different sites okay
And last is if I talk about thyroid and parathyroid hormone, basically thyroid hormones is if I talk about is associated to your regulation of basal thyroid, and parathyroid is basically responsible for calcium of capillaries. अगर आप में जाएंगे तो it has huge rich blood supply. Okay, so the hormone it secretes travel to the bloodstream through the body to uh, different region of the body of a human body. What is to perform what functions to increase the metabolism, to regulate the glucose use, protein synthesis, nervous system development, and also increase the calcitonin, maintains the blood calcium hemostasis by causing the calcium to be removed from the blood and deposits into the bone when the blood levels are too high. Okay, so जब ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा होता है व्हाट हैपेंस कि वहां से वो इस थ्रू दिस hormone, so thyroid hormone, basically they helps into the calcium maintenance and regulation basically. And what happens if I talk about कि बहुत ज्यादा होगा तो ये ले जा करके बोन्स में डिपॉजिट करता है. ओके, एंड जब कम होगा तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा कि बोन से लेकर के ब्लड में उस लेवल को मेंटेन करता है. ओके, so one of the posterior back surface of the thyroid hormone के पीछे ये parathyroid hormone basically sets करता है. Typically, there are the four parathyroid glands, superior, inferior, on left and right side of the thyroid, and they secrete the parathyroid hormone (PTH), जिसको बोलते हैं, which stimulates the release of calcium ion into the blood. I told you कि thyroid gland क्या कर रहा है कि from blood to bones देगा, but when blood requires the calcium, तो parathyroid hormone bone से लेकर के blood में उनको refill करता है. Okay. PTH also causes the kidney to reduce the calcium secretion into the urine. Okay, definitely अगर calcium maintenance PTH कर रहा है तो हम जो भी secretion sources है वहां से उसको filter out करेगा. Okay, to maintain together the calcitonin and PTH acts into the complementary way to maintain the blood glucose, blood calcium level or calcium phosphate. Okay, which is one of the most tightly controlled physiological parameters into the body. And definitely that's true कि ये बहुत ज्यादा मतलब कैल्शियम रेगुलेशन, कैल्शियम आपको बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए चाहिए, मिनरलाइजेशन के लिए चाहिए. ठीक है, अदर देन दिस इफ आई टॉक अबाउट कैल्शियम डिफरेंट मेटाबॉलिक साइकिल्स में चाहिए, जैसे कि आपका ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में भी कैल्शियम और पोटेशियम आयंस का इंपॉर्टेंट होता है. अदर देन दिस आपके नर्व सिग्नल्स जो भी होंगे, आपके जो नर्व गेट्स होता है, चैनल्स इफ आई टॉक अबाउट, तो चैनल्स में भी आपको कैल्शियम चाहिए. जब कैल्शियम चैनल्स होते हैं, जब ये ओपन अप होते हैं तभी एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है. आपका ड्रग मैकेनिज्म इफ आई टॉक अबाउट, उसमें दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल. ओके, so especially in case of anesthesia injections or local or तो उसमें calcium ions, potassium ions, sodium ions का बहुत important role होता है. Okay, so that's why calcium is very important to the body. And जो चीज important होती है definitely if I talk about, they are more into the precise regulation of कि a small unit भी उनका move हो रहा होगा तो body में उसके ऊपर tight observation रहेगी. Now coming to this iodine. Okay, so iodine is an element that requires the for the thyroid hormone to produce the thyroid hormone. Okay, so thyroid gland को function करने के लिए हमें iodine चाहिए, and iodine हम कैसे लेते हैं? Through salt. Okay, that's why we ask कि आपकी body में appropriate amount of iodine जाना चाहिए as per the regulatory guidelines, जितना भी recommended age required होता है उतना iodine जाना चाहिए. Okay, since the body does not produces the iodine on its own, it needs to come from the dietary sources and striking the right balance of the key. तो जितना right amount में आएगा उतना ज्यादा better होगा. Okay,
When you consume the iodine, it quickly absorbs and enter into the bloodstream, and the thyroid gland, tiny cells capture these, and when they capture the iodine, they iod takes it and iodize it, so it can create T3, T4, ये दो हार्मोन्स को बनाएगा ये, and thyroid hormones makes their way, sorry, throughout the body to regulate the metabolism, ensure the healthy functioning of heart, brain, and other organ. Okay, so basically iodine rich food, basically jitna bhi seafood hoga, usually you can see majority of seafood, sea related foods, they give, good amount of this, I can say, iodine. Okay, other than this, there are certain agriculture foods also which can give you, like if I talk about your baked potatoes are there. Okay, इसमें हम क्या करें कि water को dry up कर रहे हैं, dry up करने के बाद जो भी कंटेंट रहेगा वो सॉल्ट का उसमें पोटैटो में रहेगा. ओके, बट हम बॉइल्ड अप कर देंगे तो वो मूव आउट कर जाता है वाटर के साथ. That's why baked potatoes you need to remember. Strawberries, cranberries are there. They contain a good amount of iodine and sometimes yogurt also. Okay. Other than this, majority of iodine we received it from the seafoods. So last we had gut hormones. Gut hormones work in the association with the gut extensive nervous system, intrinsic nervous system. They control the appetite, the digestion of food, regulates the energy balance, and maintain the blood glucose level. Okay, तो गट में आपके डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि आपका ग्रोथ हार्मोन हो गया, गैस्ट्रिन में एसिड सिक्रेशन हो गया, ठीक है, फिर इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन हो गया, ठीक है, तो ग्लूकोज पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हो गया, अमाइलिन हो गया, फिर GLP-1, GLP-2, ठीक है, अगेन अ लॉट ऑफ hormones are present into your digestive system also, and their major function is to carry out the basic digestion proper होना चाहिए. Second thing जो है absorption proper होना चाहिए, and smooth functionalities के लिए gut hormones is required. Okay, so ghrelin is produced in the stomach, and its function is to tell the brain that the body has to be fed and increases the appetite. तो घरलिन, बेसिकली घरलिन का क्या है आपको कि आपका इसको रिस्पॉन्सिबल है एपेटाइट के लिए. गैस्ट्रिन क्या होगा आपका, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोराइड एसिड के लिए, इनके रिलीज के लिए, ठीक है, एंड गैस्ट्रिक जूसेस बॉडी में जितने भी हैं उनको जो भी रिलीज ऑन टाइम गैस्ट्रिन करवाता है. सिक्रेटिन, एज नेम इंडिकेट सिक्रेटिन, तो ये जितने भी सिक्रीशंस होंगे, ठीक है, duodenum has the effect to stimulate the pancreas to produce the alkaline secretion as well as slow emptying the stomach. तो जितने भी secretions होंगे बॉडी में वो secretin कराएगा, ठीक है. कोलेसिस्टोकाइनिन्स जो है वो अगेन ड्यूडेनम में प्रोड्यूस होता है, ये एपेटाइट को रिड्यूस करता है और एम्पटिंग को स्लो डाउन करता है. तो दैट्स व्हाई वी आस्क कि हमें फूड को जो है वो प्रॉपरली च्यू करके एंड स्लो रेट से खाना चाहिए, क्योंकि जो डिमांड होता है कि नहीं नाउ फूड योर स्टमक इज फिल, तो वो आपका जो आता है वो स्लो प्रोसेस से आता है. दैट्स व्हाई कि हम जब स्लो रेट से खाते हैं तो हमें आइडिया लगता है, बट हम फास्ट खाते जाते हैं और वो प्रोसेस क्योंकि स्लो प्रोसेस है तो इट विल डिले द टाइम, तो वी विल ओवर इट. ओके, peptide is produced in last part of the small intestine and known as ileum as well as the part of large intestine. It plays a role in slowing down the passage of food along the gut, which increases the efficiency of digestion and nutrient absorption after the meal. Okay, and glucagon like peptide 1, GLP-1, is produced into the small intestine and colon and has a multiple action, including the inhibition of the gastric emptying and appetite as well as stimulate the insulin release. So these are the major roles of different hormones, your gastric hormones. Now I talk about pancreas. So basically pancreas जो है वो आपका insulin regulation में help करता है. Okay, so dual purpose gland, it also plays a role into your this digestive system
and then excretes the pancreatic juices into the small intestine via pancreatic duct. And scattered within the pancreatic areas, there is also a tiny cell clusters called pancreatic islets or Langerhans cells. We called it as, and these Langerhans cells is responsible for your, you know, this आई कैन से ग्लूकोज का जो मेंटेनेंस लेवल है वो लैंगरहैंस सेल्स के थ्रू मेंटेन होता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस cells basically maintains the glucose level when they are released into the bloodstream. So these isolates makes up less than 2% of pancreatic tissue, but their specialized cells regulates the blood glucose level. तो आपका जो भी blood में glucose level होता है वो यही maintain करता है. When it loses its property, so people will suffer from diabetic condition. Okay. So when the blood glucose is high, the beta cells of these isolates releases the insulin and which increases the glucose reuptake. तो जब blood में glucose का level high हो जाता है तो what happens कि ये cells जो है वो insulin को release करता है and insulin क्या करता है कि उन ions को उन glucose को reuptake कर लेगा दोबारा से absorb कर लेगा. Okay. But if if there is some metabolic dysfunctioning or problem with these isolates of Langerhans, so they will not they will not release the insulin, or when they will not release the insulin, gradually what happens? So glucose level will rise enough. So this is how the diabetic condition happens into the human body. So physiology is this. Okay. So with this we cover up the endocrine system. Different growth hormone अगर उसका level कम होगा तो you will suffer from different disease condition. Parathyroid hormone का अगर level कम होगा तो you will suffer from different metabolic disease. If I talk about a thyroid level तो आपका hypothyroidism होता है, hypothyroidism होता है, hypo is low, hyper is high. So there are different disease condition also associated with the functionalities of these hormones. Okay. So with this this system is endocrine system is ended now. Okay, so I'm ending this lecture. Any doubts related to today's lecture before ending? उसमें वो ये लेक्चर या जो इसका लिंक है यूट्यूब वाला या फिर ये जो लेक्चर है ये अगर वो सीमा के थ्रू हम लोग को मिल जाएगा. I'll share. मैंने लास्ट में कुछ तो पीछे किए थे, ठीक है, इधर एक जी दो लेक्चर के मैंने लास्ट में नहीं किए, तो आई विल शेयर विद द पर्सन सीमा, शी विल शेयर विद यू. ओके, मैं जी पूरा का प्लीज. पूरा PDF आपको शेयर कर दूंगी. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू वेरी मच मैम. वेलकम.